We were talking about differentiable atlas on a manifold. So, if we have an n-dimensional manifold M, then we consider a collection of charts u alpha phi alpha, alpha belonging to some index set I. So, this is called a chart. So, a collection of charts is called an atlas on M. This is the atlas on M. So, every manifold, topological manifold has an atlas. Okay. So, now we observe the following. Suppose this is an n-dimensional manifold. It is covered by all open sets u alpha. So, there is it may happen that the two open sets u alpha may intersect somewhere. So, if one is u alpha, other is u beta, two open sets, they have a non-empty intersection over here. U alpha is homeomorphic to some open set over here, say phi alpha u alpha. This is open in R. Similarly, u beta is also homeomorphic to some other open set phi beta u beta, and the homeomorphism are phi alpha and phi beta. The intersection part, this part u alpha intersection u beta will be mapped to this shaded part. That means it is phi alpha of u alpha intersection u beta. Similarly, it will be mapped to this shaded part, which is phi beta of u alpha intersection u beta. So, notice that phi alpha of u alpha intersection u beta as well as this, both are open subsets of Rn, because this intersection of two open is open. Homeomorphism will take open sets to open sets. So, these are open sets. So, now automatically I will be getting this map, which is in fact phi beta composition phi alpha inverse. Okay. So, if I forget about the manifold and concentrate over the map phi beta composition phi alpha inverse, this is a map from open set of Rn to open set of Rn. So, we call this map a transition map. So, whenever there is a non-empty intersection between two open sets on a manifold, this map will emerge, as well as from this side. This map will be phi alpha composition phi beta inverse. These maps are important to us. We call them transition maps. What we are asking to ourselves is that when are these maps differentiable? If these maps are differentiable, our atlas A will be important atlas. It is a special atlas. We do not expect that every atlas should have this property that transition maps are differentiable. Okay? If our atlas is such that whenever two open sets intersect, the transition maps are differentiable, we say our atlas is differentiable. So, A is differentiable. A is called a differentiable atlas, called a differentiable. I explained to you, when all partial derivatives of this map, they exist up to class CR, then we will say it is differentiable of class CR. So, when I say all partial derivatives of all order exist and they are continuous, this map is C infinity map, or we also call it a smooth map. So, if A is called a smooth atlas or C infinity atlas, if phi alpha composition phi beta inverse and phi beta composition phi alpha inverse are C infinity maps.
Okay. One can notice that these two maps are inverse of each other. Okay. So, we can also say that this map is a diffeomorphism. Okay. Because homeomorphism tells you that these maps are 1-1 continuous. We are further demanding that they should be differentiable and the other way around also differentiable. So, practically speaking, we are asking ourselves that these maps are diffeomorphism. So, if the transition, all transition maps, whenever u alpha and u beta have a non-empty intersection, the transition maps are differentiable. The atlas is called a differentiable atlas. Okay, so this is, in other words, this also implies that phi alpha composition phi beta inverse is a diffeomorphism. Okay, so this is the definition of a differentiable atlas. Now, as an example, we must look at what atlases we have already discussed and see which of them is differentiable and which one is not differentiable. So, let me start from the trivial one. The first example that we talked about was the example of the space Rn. We observed that this is in fact a topological manifold of dimension n, and the atlas on Rn is in fact consists of single chart. The whole Rn is open in itself. The identity map is a homeomorphism. So, this gives me an atlas. Now, in order to check whether this atlas is differentiable or not, it is simple to realize that Rn intersect with itself and the corresponding transition map will be I composition I inverse, which is once again I, and I, the identity map on Rn is a diffeomorphism. It is a known fact. So, obviously A is a differentiable atlas. There is nothing technical to check here. It is obviously a differentiable atlas. Okay. In particular, if I look at R is a one-dimensional manifold, Rn is a differentiable manifold for all n, for all positive integer n, Rn is a differentiable manifold, a topological manifold. In particular, R n equal to 1 admits an atlas which is differentiable. So, R together with I, this also I will call as A, is a differentiable atlas in particular. It is a differentiable atlas. Okay, so one thing more I was telling you that there may be more than one atlases on a manifold. It depends on homeomorphism. You go on changing homeomorphism, you go on getting different atlases. So, over here if I look at another atlas, so consider a map say F from R to R given by Fx equal to x cube. I have taken an odd power. Okay, you can consider x to the power 5, 7, etc. Now, all these maps, in particular this one, is a homeomorphism. It is a 1-1 continuous, inverse also continuous. So, it is easy to check that F is a homeomorphism. Once you realize that this map is a homeomorphism, it is a map from whole R to whole R. So, therefore, I can say that R together with this homeomorphism becomes a chart. Okay, since R cover itself, I will say this collection beta
is a atlas. So, this implies that this beta or B curly B is an atlas on R. So, the first atlas was this trivial atlas. Here the homeomorphism was simply identity. Here I have changed it, it is an F. So, you got another atlas. Now, the yes, now I have to ask myself, is it differentiable? The answer is once again simple, yes, it is also differentiable. How will you check? F composition, F inverse. You have only one homeomorphism and R intersect with itself. So, the transition map over here will be what? Transition map is F composition, F inverse. Okay, and this is what? This is identity map. So, this is identity map. Identity map is always differentiable. It is a diffeomorphism. So, once again I reach to the conclusion that the second atlas B is also a differentiable atlas. ओके और यही नहीं, आप यहाँ पे x to the power 5, 7, 9 एट्सेट्रा जो भी पावर लेंगे हमेशा आपको होम्योमॉर्फिज्म मिलेगी, इवन पावर्स के साथ नहीं मिलेगी, ठीक है ना. ऑड पावर्स विल ऑलवेज गिव यू अ होम्योमॉर्फिज्म एंड एवरी टाइम यू विल सी द सेम थिंग. इट विल yes, infinitely many. 5, 7, And so all odd powers will give you. Not only this, there are many combinations also. means that infinite atlas exists on One manifold. Yes, not only R, on many others also. There are very few who have only countable atlases, otherwise you have uncountably many atlases. My questions are every manifold is a topological space. Actually, I was not present in previous lecture. So, every manifold is a topological space. But topological space is all topological space is a manifold. No. Yeah. Second condition is that it should be locally Euclidean. Locally Euclidean. All topological spaces are not locally Euclidean. But all manifold is topological. Yes, true, very true. Okay. Now, let us see some non-trivial examples of differentiable atlases. Let me start with this was the example number 1. Example number 2 is that of a circle. If you remember, we have discussed atlases in two different ways, one through canonical projection and other through stereographic projection. Now I will see that both of them are differentiable. Let me start. S1, as you remember, is the set of all pair of real numbers. That means set of all points in R2 such that x square plus y square equal to 1. Now, if you consider these charts U1 phi 1, U2 phi 2, V1 psi 1, V2 psi 2. This is an atlas that we discussed in our last lectures. U1, U2, V1, V2, they are semicircles. U1 is the upper semicircle, endpoints excluded. U2 is the lower semicircle, endpoints excluded. Similarly, V1, V2 are semicircles in the right of y-axis and in the left of y-axis. Phi 1, phi 2, psi 1, psi 2 are projections onto the coordinate axis. Okay, I should not go into the details, you remember all these things. So, now if you look at the figure,
This is the unit circle, and this part of the circle, I mean the upper semicircle, I am calling as U1. This lower semicircle below x-axis I am calling as U2. In both occasions, these endpoints have been excluded. V1 is this semicircle in the right of y-axis. This is V1. And on the left of y-axis you have this semicircle, which we are calling as V2. For U1 you have this map, the projection onto x-axis, and the projection onto x-axis on U2 is denoted by phi 2. They are homeomorphism. Similarly, this projection is denoted by psi 1, and the projection from this side is denoted by psi 2. Now, to check the transition maps, I have to see which part is intersecting part. So, you can see U1 and V1, they have been intersecting. So, U1 intersection V1, if I look at it, similarly U1 intersection V2, they have non-empty intersection. So, U1 intersection V1 will be what? Set of all xy on the circle. For U1, y is strictly positive. For V1, x is positive. So, here x should be strictly positive as well as y should be strictly positive. So, intersection part, as you can see from the figure, is this part of the semicircle, and this time also these points have been excluded because of the x is strictly y is strictly positive. So, this is my U1 intersection V1. I have to see the transition map. The transition maps on U1 intersection V1 on U1 intersection V1 are the following. क्या है transition maps? यहाँ पे phi 1 है और यहाँ पे psi 1 है. तो एक तो हुआ phi 1 composition psi 1 inverse और दूसरा हुआ psi 1 composition phi 1 inverse. And these are maps from what to what? U1 intersection V1. जब आप U1 से मैप कराते हैं phi 1 के थ्रू, तो आप लैंड करते हैं इंटरवल -1 + 1 पे, ठीक है ना? Phi 1 sends all points of the upper semicircle onto this open interval. Similarly, जब V1 को मैप कराते हैं psi 1 के थ्रू, तो वो लैंड करता है once again into the interval -1 + 1. ओके? और ये जो क्वार्टर सर्किल है, ये लैंड करेगा बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में. सो दीज आर द मैप्स फ्रॉम 0 1 to 0 1. ठीक है ना? सो एक चेक कर लीजिए कोई, सेम वे दूसरा भी चेक हो जाएगा. सो phi 1 composition psi 1 inverse is a map from 0 1 to 0 1. ठीक है ना? और आपको देखना पड़ेगा phi 1 composition psi 1 inverse will operate on a real number between 0 and 1. So, sir, लेक्चर चल रहा है. Phi 1 composition psi 1 inverse. So, let me recall the definition. So, phi 1 of xy was equal to x. Am I right? And psi 1 of xy, if you remember, its definition was this is y. X and y are related by this relation, x square plus y square at every point of the circle is 1. So, x and y are dependent on each other.
So you can say y equal to under root 1 minus x square and x is equal to under root 1 minus y square. पॉजिटिव मैं इस वजह से ले रहा हूँ कि आप सिर्फ इतने हिस्से पे हैं, तो ये हो जाएगा आपका phi 1 of psi 1 inverse of t and phi 1 of psi 1 inverse को आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है ना. तो y equal to under root 1 minus x square. So what follows from here, the psi 1 inverse of y equal to xy, am I right? Or you can say this is x comma under root 1 minus x square. Okay? So this will be t comma under root 1 minus t square. ठीक है ना, y के टर्म्स में लिख रहे हैं ना आप, तो आप इसको ऐसे लिखिए ना, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉमा, ऐसे लिखिए ना. सो ये भी चेंज कर लीजिए. सो दिस विल बी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमा. Now what phi 1 does, it sends it onto the x coordinate, so it will be under root 1 minus t square. So I have got a map phi 1 composition psi 1 inverse of t equal to under root 1 minus t square. You know, it is a differentiable map. The only problem that occurs is at t equal to 1. T equal to 1 has already been excluded. Okay? क्योंकि इंटरवल 0 1 में से आ रहा है, 0 और 1 दोनों एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, तो t इक्वल टू 1 इज़ नॉट. इसको म्यूट कर दीजिए. Alright, so this map I will say is differentiable at every point of its domain. So this implies phi 1 composition psi 1 inverse is C infinity or differentiable simply. And not only this transition map, every other transition map will also be differentiable and you can check it up on the same lines. बिल्कुल इसी तरह आप इस इंटरसेक्शन पार्ट पे भी देख सकते हैं, इस इंटरसेक्शन पार्ट पे भी, और बाकी सारे इंटरसेक्शन पार्ट पे आप देखेंगे कि आपका जो ट्रांजिशन मैप है वो डिफरेंशिएबल है. तरीक़ा यही होगा, ठीक है. एंड देयरफॉर यू विल कंक्लूड दैट द एटलस ए इज़ ए डिफरेंशिएबल एटलस. ओके, हाँ, और स्मूथ एटलस. ऑलराइट, एंड we not only have this atlas, we have other. Atlas will be existing differentiable atlas. It will always exist smooth, or sometimes it No, these are terminology. We call it either a C infinity atlas, or sometime we can call it a smooth atlas, or simply differentiable atlas. So my question: whenever these transition maps will be differentiable, they will be differentiable of order C infinity always. No, not necessary. Not necessary. Not necessary. This is C infinity. There may be atlases of a lower class of differentiability. So, in fact, this time it is the C infinity differentiable. There may be atlas of. If it is of class C1 or C2, then atlas will be not smooth. We will call it a C2. C1 atlas or C2 atlas, like that. Yes. Yes. It is only I am talking of this atlas. Okay. Alright, there was another atlas B on the circle, and that was defined through a stereographic projection. So there were two charts, U phi and V psi. How did you define? If you remember, instead of U1, U2, etc., we had considered U1 or U
here U was in fact an open set which was consist of all points of the circle, only 0, 1 was excluded from here. This is open. Similarly, the open set S1 minus 0 minus 1 is an open subset of the circle. So these are the two open subsets of the circle. The reason why they are open I have already explained. Now I defined a map phi from U to R, and this is a stereographic projection, and this map is given by phi of xy equal to x upon 1 minus y. This is how Here means that we can stretch the circle from two points. yes, exactly. It means that, yes. Or you can say that if you want to find the image of a point, say xy, onto the real line, what you do is you join this with the north pole and extend it so that it meets somewhere over here. So this point will be x upon 1 minus y. Okay. So the image of the point xy is x upon 1 minus y, and this way you can find out image of every point. The image of this xy will be this point. This is once again x upon 1 minus y. Okay. Similarly over here, etc. The image of the south pole 0 minus 1 will be just 0. Okay. All right. So, and psi, similarly psi is a function from V to R, and it is defined by psi xy equal to x upon 1 plus y. Okay. Now the intersection of U and V is a complete circle except the north pole and the south pole. Okay. So intersection of U intersection V is the circle without these points 0, 1 and 0 minus 1. These 2 points have been excluded from the circle, and the remaining part of the circle is U intersection V. Now, so this is of course non-empty set. This is non-empty, and therefore I can think of transition map. So transition map are two over here. One is phi composition psi inverse and psi composition phi inverse. Okay. You can check both of them whether they are differentiable or not. So phi composition psi inverse will be a map from where to where? How Ashkar? What will be the domain and range of phi composition psi inverse? पूरे सर्किल में से सिर्फ 2 पॉइंट निकले हुए हैं, एक 0, 1 और एक 0 माइनस 1. तो जब आप बैक करेंगे तो आपको इनकी इमेजेस देखना पड़ेगा क्या है. साई के अंडर अगर आपको नॉर्थ पोल की इमेज देखनी हो तो वो 0 होगी. फाई के अंडर आपको अगर साउथ पोल की इमेज देखनी हो तो वो 0 होगी. और इसका मतलब है कि 0 इज़ द इमेज ऑफ दीज 2 poles which I have already excluded. So from the image space this 0 will be excluded. So the domain will be the entire real line except 0. So this is R minus singleton 0. Okay. And you will go into R. साई इनवर्स क्या करेगा, आपको R से मैप करा देगा सर्किल के ऊपर, और फाई क्या करेगा, दोबारा से वापस R में ले आएगा. सो दिस विल बी द मैप फ्रॉम हियर टू हियर.
ओके अब देखना ये है कि ये किस तरह से डिफाइन होता है. So phi composition psi inverse of t. T is a non-zero real number. So that will be phi of psi inverse of t. Psi inverse t. Psi को देखिए ज़रा क्या था. ये let me recall. Psi of xy was equal to x upon 1 plus y. इसको मैं थोड़ी देर के लिए t कह लेता हूँ. अब मुझे साइन इनवर्स t चाहिए इन टर्म्स ऑफ t. तो अगर हम x अपॉन 1 प्लस वाई को t बोल रहे हैं तो व्हाट आई वांट हियर आई वांट टू फाइंड x and y in terms of t. Okay, x and y are related between themselves, so that is to be used. This fact is to be used that x square plus y square is 1. So what I will do, I will square, so x square upon 1 plus y whole square will be equal to t square. Okay, अगर इसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूं तो 1 will be added here. So this will give me 1 plus y square plus 2y plus x square upon 1 plus y whole square equal to 1 plus t square. Am I right? Now x square plus y square is 1 and this is also 1, so it is 2 plus 2y. 2, if you take common from the numerator, it will become 2 times 1 plus y upon 1 plus y whole square equal to 1 plus t square. So what do you get? You get 2 upon 1 plus y equal to 1 plus t square, or I can say that 1 plus y equal to 2 upon 1 plus t square. This is an important relation. And from here you can also find y. Y will be equal to 2 upon 1 plus t square minus 1. That is 2 minus 1 minus t square upon 1 plus t square. That is 1 minus t square upon 1 plus t square. So y equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay. Now, okay, x को भी निकालना है तो हमने मालूम किया था क्या? X equal, so x equal to, from here, x equal to t times 1 plus y. 1 plus y is here, so this is equal to 2t upon 1 plus t square. So x is also determined. X and y both you have found. So I can write down the definition of psi inverse t. So this becomes phi of psi inverse t will be x comma y, that is 2t upon 1 plus t square, and what is y? 1 minus t square upon 1 plus t square. This will x upon 1 minus y, so it will generate. And now phi, how does phi act? X upon minus. X upon phi of xy, let me write down here, is x upon 1 minus y. So I can complete the definition of phi composition psi inverse. So this gives me x upon phi of psi inverse of t is equal to phi of this, पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, 2t upon 1 plus t square, 1 minus t square upon 1 plus t square, and phi, as you told me, is x means 2t upon 1 plus t square upon 1 minus y.
1 minus y means 1 minus t square upon 1 plus t square. बस ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको एंड यू गेट द डेफिनेशन. तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. मैं डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. हाँ हाँ ओके, तो लेट मी राइट डाउन 2t upon 1 plus t square, and in the denominator you have 2t square upon 1 plus t square. So these are cancelled out. 2 will also be cancelled. This comes out to be 1 upon t. So phi composition psi inverse of t is simply 1 upon t. यहाँ पे आके आप देखेंगे अपने मैप को और सोचेंगे क्या ये डिफरेंशिएबल है थ्रू आउट इट्स डोमेन. 0 is already excluded, I have seen, and therefore it is differentiable on the entire domain, and therefore it's a differentiable function. And differentiable of class C infinity. और ये तो मैंने एक ट्रांजिशन मैप ही उठाया, सेम वे दूसरा भी जब चेक हो जाए तब आप कह सकेंगे यस एटलस बी इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल. ठीक है. सो दिस, तो वो बाकी हिस्सा आप अपने आप से चेक कर लीजिएगा. आवर कंक्लूजन इज द एटलस बी इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल. ओके. अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और आपके जहन में आता होगा कि अगर एक से ज़्यादा एटलसेस हैं और वो डिफरेंशिएबल ऑफ क्लास सेम क्लास के आ भी रहे हैं, तो उनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन या कोई कॉम्पैटिबिलिटी हमको होनी चाहिए, देखना चाहिए. लेकिन इस सवाल को मैं फ़िलहाल पोस्टपोन कर रहा हूँ. द आंसर इज़ यस, वी कैन थिंक ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी अमंग द एटलसेस, डिफरेंशिएबल एटलसेस ऑफ द सेम क्लास, बट दैट्स आई एम लीविंग फॉर ए वाइल. वी विल कम टू दिस क्वेश्चन लेटर ऑन. मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ बात को कि ये ऐसा नहीं है कि सर्किली के ऊपर ये एटलसेस डिफरेंशिएबल हैं. इन जनरल एसएन के ऊपर हमने डिफरेंशिएबल एटलसेस की बात की हुई है. सो इफ़ आई लुक एट एसएन, इफ यू रिमेंबर, वी कॉल इट एन स्फीयर. इट्स ए यूनिट स्फीयर. इट्स ए सबसेट ऑफ आर एन प्लस 1. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एन प्लस 1 tuples in Rn plus 1 such that x1 square plus so on xn plus 1 square equal to 1. All right. Yes. Now the let me check only stereographic projection. The atlas obtained through canonical projection can be checked in the same manner. That was easy part. Yes. Okay. Over here we have once again denote the open set by u and v. Yes. And this is the first one is Sn with 0 0 0 1. Now this time this is the north pole. So north pole is being deleted to obtain open set. Similarly, this time I will denote the south pole. This is also open. On U we had defined stereographic projection. This is a map from U to Rn. Here the homeomorphism was defined from V to Rn. We had determined both of them in our last lectures. Phi was given by x1, x2, x3, xn, xn plus 1. The points of the sphere are n plus 1 tuples. So phi is given by x1 upon 1 minus xn plus 1, x2 upon 1 minus xn plus 1, and so on. Xn upon 1 minus xn plus 1. So you are landing into Rn, so you have n tuples.
In the same manner, I will look at this psi. Psi was given by. In the same manner, the only difference was it will be instead of 1 minus xn plus 1, here you will be having 1 plus xn plus 1. So this x1 upon 1 plus xn plus 1. Last one is xn upon 1 plus xn plus 1. These are the two homeomorphisms that you have on u and v respectively. So what we have to see is the atlas B. The atlas B on Sn consists of two charts, u phi and v psi. Now we have to see whether the transition maps are differentiable or not. So there will be only two transition maps because there are only two charts. So the transition maps will be phi composition psi inverse and psi composition phi inverse. ओके यही हो सकता है और फिर देख लीजिए कि इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है. जब आप स्फीयर से मैप कराते हैं तो नॉर्थ पोल की इमेज जो रीजन होती है अंडर द मैप साइड और साउथ पोल की इमेज अंडर फाई विल आल्सो बी 0 0 0 0 0. ठीक है, तो जब आप इन दोनों को निकाल देंगे यू और वी में से तो इसका मतलब है कि 0 Rn में से निकल जाएगा और बाकी पूरा Rn जो बचा हुआ है वही डोमेन होगा, वही रेंज होगी. ठीक है, सो दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड दैट व्हाइल लुकिंग एट दीज मैप्स 0 द ओरिजिन ऑफ Rn इज एक्सक्लूडेड. ओके, सो लेट अस लुक एट phi composition psi inverse. It's a map from where to where? From Rn minus 0 to Rn minus 0. So I will take a non-zero point of Rn. Let me call it y1, y2, y3 and so on. And this will be equal to psi inverse of y1, y2, y3, yn. अब पहले तो ये देखिए कि ये y1, y2, y3, yn को क्या होंगे. अगर मैं इसको ही y1 यहाँ पे डेफिनेशन ही पे आ जाऊँ, इसको y1, इसको y2 और लास्ट वाले को yn बोलूँ, तो मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि ये सारे एक्साइज जो हैं इन टर्म्स ऑफ y कैसे एक्सप्रेस होंगे. ठीक है, अब फ़िलहाल हम इतना ही सोच रहे हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस वाई आइज इन टर्म्स ऑफ एक्साइज. ठीक है, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, y1 को मान रहा हूँ कि ये x1 अपॉन 1 प्लस xn प्लस 1 है, y2 इन द सेम मैनर इज x2 अपॉन 1 प्लस xn प्लस 1 एंड सो ऑन. सिमिलरली yn इक्वल टू xn upon 1 plus xn plus 1. ओके, तो यहाँ पे मुझे सर्किल वाली टेक्निक याद है, वही टेक्निक यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे. तो मैं क्या करूँगा, सारे वाई आइज का स्क्वायर करके 1 ऐड करके देखता हूँ, तभी मुझे वो जो पॉइंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यूज़ हो पाएगी. सो नाउ y1 स्क्वायर plus y2 square plus yn square will be equal to how much? It will be स्क्वायर करके एक 1 भी ऐड कर दीजिए. तो ये राइट साइड में इसको देखिए, इसके स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस xn प्लस 1 इसका भी स्क्वायर होगा और ये ऐड हो जाएगा. तो ये xn प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स xn प्लस 1 एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव 1 प्लस xn प्लस 1 होल स्क्वायर.
सो द लेफ्ट साइड इज 1 प्लस समेशन वाई आई, लिख लेते हैं इसको शॉर्ट में, आई इक्वल टू 1 to n, और राइट साइड में इन सारे का स्क्वायर्स का सम जो है 1 होगा, एक 1 और है यहाँ पे तो वो 2 हो गया, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 1 प्लस एक्स एन प्लस 1। उसी तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, 1 प्लस एक्स एन प्लस 1 होल स्क्वायर, so this bracket is cancelled out and you get 2 upon xn plus 1 plus। आपको y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, ये बार बार दिमाग में रखिए। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा 1 प्लस एक्स एन प्लस 1, ये हर जगह आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर, आई रन्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और एक तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, रखिए अपने पास, और यहाँ से एक्स एन प्लस 1 भी पता चल जाएगा आपको, एक्स एन प्लस 1 हो जाएगा, नीचे ही है, -1 कर दीजिए तो 2 माइनस 1 माइनस वाई आई स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1 माइनस समेशन वाई आई स्क्वायर, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर 1 प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर। आई होप द कैलकुलेशंस आर सिंपल, सो एवरीबडी विल अंडरस्टैंड। अच्छा, अब मसला है सारे x1 का, x2 का वगैरह वगैरह। तो x1 क्या है देखिए ज़रा, x1 है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, x1 यहाँ पे देखिए तो y1 टाइम्स 1 प्लस xn प्लस 1, xn 1 प्लस xn प्लस 1 को हमने संभाल के रखा हुआ है, तो ये हो गया 2y1 अपॉन 1 प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर, ठीक है, x1 आ गया, बिल्कुल ठीक उसी तरह y2 भी x2 भी आ जाएगा। तो सिमिलरली आई कैन राइट डाउन x2 इक्वल टू 2y2 अपॉन 1 प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर, ठीक है। अब टू xn विल बी 2yn अपॉन 1 प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर, और xn प्लस 1 यहाँ पे पहले से है तो उसको भी लिख लीजिए साथ में ही, इफ़ इट इज़ क्लियर, xn प्लस 1 इज इक्वल टू दिस वन, 1 माइनस समेशन वाई आई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर, ओके। अब मैं लिख सकता हूँ डेफिनीशन, यहाँ पे थे हम ना, तो ये यहीं पे कंटिन्यू कर जाइए आप। फाई ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y1 y2 इज x1 x2 xn प्लस 1 तक, तो ये हो गया, यहाँ से शुरू करिए 2y1 अपॉन 1 प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर एंड सो ऑन, 2yn अपॉन 1 प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर, और xn प्लस 1 तक जाना है तो वो ये है 1 माइनस समेशन वाई आई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर। अपनी आसानी के लिए आप समेशन 1 प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, या नहीं चाहते तो रहने दीजिए। अब फाई का देखिए क्या एक्शन होता है, फाई का एक्शन कहाँ है, फाई का एक्शन ये है, हमें मालूम है, फाई वॉज डिफाइंड एज x1 x2 x3 xn प्लस 1, कैसे था, x1 अपॉन 1 माइनस xn प्लस 1, और लास्ट था xn अपॉन 1 माइनस xn प्लस 1। This is how phi acts. So let us see, it will be
our x1 is the first entry, that is 2y1 upon 1 plus summation yi square upon 1 minus ये xn प्लस 1 अब हमारा ये है, तो ये हो गया 1, इसको लिखना है, माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 1 इसके चलिए मैं यहीं पे सिंपल डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस समेशन yi स्क्वायर माइनस 1 प्लस समेशन yi स्क्वायर अपॉन समेशन 1 प्लस समेशन yi स्क्वायर। सो ये 2 टाइम्स, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 टाइम्स समेशन yi स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समेशन yi स्क्वायर। So numerator that is I square. So numerator term. न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है। Repeat concept. अब ये कैंसिल हो गए और आपके पास आया, अच्छा इसी तरह से बाकी टर्म भी आए, Yes, last. ओके लास्ट तक लिख लीजिए, लास्ट वाले लिख लीजिए 2yn अपॉन बच गया 2 टाइम्स समेशन yi स्क्वायर, 2 से 2 भी काट दीजिए, यहाँ भी काट दीजिए, ये कोई गलती से नहीं हुई, ठीक है सर, next time that is next. okay, so what I get is y1 upon summation yi square and so on yn upon summation yi square, तो एक तरह से यूनिट वेक्टर आ गए, ठीक है ना। तो जो yn के पॉइंट्स थे वो दोबारा से सरफेस पे पहुंच रहे हैं स्फीयर के, तो यूनिट तो होना ही चाहिए था उनको, and that is exactly what you have been getting. All right, so this is how phi composition psi inverse is defined. Now we were checking it for differentiability. तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप क्या करते हैं, कंपोनेंट्स के डेरिवेटिव देख लेते हैं Yes. कि किस ऑर्डर तक के डेरिवेटिव हैं, तो ये सब डिफरेंशियबल फंक्शंस हैं, so therefore I will say कि yes they are differentiable and transition map is differentiable. One more transition map is left to be checked, so that can be checked easily by our students. So atlas, both the atlases on the spheres are differentiable atlases, okay. All right, now I am moving towards a maximal atlas. So can you start now? Okay, how much time I have taken? 33? 53. 53. So, okay, so I will talk about maximality of an atlas and the other related issues in my next lecture. So, we stop at this point.